Hey guys, welcome to today's video. In this video, I'm going to talk about products that I absolutely love, but I do not like their packaging and I do have my own reasons. So whenever I am buying a product, I do like to see some practicality in that. It should be travel friendly. It shouldn't be something that can break easily. I know that currently we are not traveling anywhere, but when I bought these products, I was okay. And these are the products that I use constantly in my routine. There might be one or two that you might have not seen that much on my channel, but trust me, I use them off camera and I'm going to talk about each one of these. It doesn't mean that I hate the brand. It's not going to happen ever. It's just that these particular products from these brands didn't work for me in terms of packaging. Otherwise, I love the formula, which is why they are in my favorite videos. Okay, so let's start with the very first one. I have to include this Maybelline foundation. I know I'm breaking a lot of hearts right now. I love the formula of this product. It blends easily on my skin and it looks so natural. At least on me it has worked. But I don't like that it comes without a pump. And every single time I use it, it becomes so tricky to make the right color because I like to mix two colors. I'll mention the second color in the description box. So what happens whenever I try to mix them, अगर लाइट वाला कम हो जाता है तो फिर जो थोड़ा सा डार्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक बहुत कम हो जाता है तो एक ज्यादा हो जाता है. पंप में क्या होता है कि आप एग्जैक्ट पंप वाइज आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट को, बट इसमें क्या होता है कि कभी ज्यादा या कम जो है बाहर निकल जाता है बॉटल से और फिर आप उसे वापस ऐसे ऐसे करके डालते रहते हो, तो वो थोड़ा मुझे इरिटेटिंग लगता है. अदरवाइज आई रियली लाइक द फॉर्मूला. द रेंज, फिट मी रेंज ऑफ Maybelline हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी. फिट मी रेंज से ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद ना आया हो. प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद. मुझे उनका एज रिवाइन कंसीलर बहुत ज्यादा पसंद है. फिट मी भी अच्छा है पर जब मेरी ड्राई स्किन होती है. अदरवाइज आई थिंक फिट मी रेंज से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसने मेरे ऊपर काम ना किया हो अप अनटिल नाउ, जितने इंडिया में लॉन्च हुए हैं. बट इसकी जो पंप ना होने वाली कमी है उसको जो है आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता. ओके थोड़ा हैवी वर्ड हो गया, बट इसमें अब पंप आने लगा है. वो शायद उसमें 25 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ते हैं. एटलीस्ट जब मैंने देखा था तब ऐसा ही कुछ था. मेरे बाल एकदम से दूसरी दिशा में चले गए. बट या जब मैंने देखा था तो उस समय जो था इसमें 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे आपको पंप के लिए. आई गेस अब शायद पंप का प्राइस फाउंडेशन के प्राइस में इंक्लूड कर दिया, विच इज ग्रेट. बट अभी भी बिना पंप वाला वर्जन भी वो बेच रहे हैं. तो आई थिंक Maybelline को पंप इंक्लूड कर देना चाहिए और बिना पंप वाली पैकेजिंग को डिसकंटिन्यू ही कर देना चाहिए एक तरह से. आई डोंट थिंक, मे बी शायद मेकअप आर्टिस्ट को ये अच्छा लगता होगा. आई डोंट थिंक मेकअप आर्टिस्ट को भी पंप में ही इजी लगता है. उन्हें सैनिटाइज करने में इजी रहता है. सो विच इज वाई आई वुड से कि इसकी पैकेजिंग अगर Maybelline जो है वर्ल्ड वाइड पंप वाली ही कर दे तो बड़ा सही रहेगा. देन आता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात करी है, जो मुझे एज अ कंसीलर बहुत पसंद है. LA गर्ल का ये प्रो कंसीलर. इसमें एक तो शेड इतनी शानदार है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर कंसीलर ब्रांड्स और ब्रांड्स इन जनरल टू लॉन्च अ रियली गुड शेड रेंज व्हेन इट कम्स टू कंसीलर्स. एंड LA गर्ल ही सिर्फ वो एक ब्रांड है जिसमें देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ शेड रेंज. So people can really pick their concealer shade from LA Girl, especially if you have a yellow undertone. I think LA Girl is the only brand. अगर मुझे yellow undertone का फाउंडेशन या कंसीलर चाहिए तो मैं LA Girl का एक बार जरूर जाके स्वॉच करती हूँ और उसमें मुझे मोस्टली मिल जाता है. और LA Girl का मेरे पास उनका HD मैट फाउंडेशन भी है जो कि अबव 1000 वाला है. मैट वाला फुल कवरेज है वो मुझे बहुत पसंद है. और उसके बाद उनका एक कंसीलर. बट इसमें ये जो ब्रश है ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है क्योंकि जब आप इसको प्रेस करते हो प्रोडक्ट निकालने के लिए तो हर बार ज्यादा प्रोडक्ट पहले तो आएगा नहीं, एयर बनती रहेगी इसके अंदर, ठीक है. और जब आएगा तो एकदम से बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाता है. उसके बाद कितना भी आप ट्राई कर लो ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बच ही जाता है. अभी भी देखिए मेरे को कितने दिन हो गए इसको यूज करे हुए और मैं हमेशा अपना पूरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ फेस पे, फिर भी इसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट बचा हुआ है. और उसका कारण यही है कि इन्होंने एप्लीकेटर इस तरीके का बनाया है. मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, मुझे इनकी शेड रेंज बहुत पसंद है, बट आई जस्ट फील
कि अगर ये इसका एप्लीकेटर बेहतर कर दें तो ये और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा और प्रोडक्ट वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी. नेक्स्ट इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस वन इज फ्रॉम K Beauty. Now I know a lot of people will get bugged because I think जब लोग ये मेरी बात सुनेंगे तो उन्हें लगेगा बट आप हमेशा एक ब्रश तो कैरी कर ही सकते हो. बट अभी मैं होम क्वारंटीन हूँ, लेकिन हमेशा तो हम होम क्वारंटीन नहीं रहेंगे, राइट? और ये मेकअप प्रोडक्ट है. मेकअप प्रोडक्ट नीड के लिए कभी नहीं बनाया जाता. मेकअप एक लग्जरी कह सकते हैं आप. चाहे आप 800 रुपए का फाउंडेशन ही लगा रहे हैं और शार्लेट टिलबरी नहीं भी लगा रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगी मेकअप इज नॉट अ नीड. योर नीड्स आर फूड, क्लोथिंग, health insurance, medical facilities, and your education. Makeup is definitely not one of them. But in this case, whenever I buy products, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि क्या अगर मैं इसके साथ ट्रैवल करूंगी तो मुझे और प्रोडक्ट्स ले जाने की जरूरत ना हो. आप देखेंगे उन्होंने सिमिलर ही पैकेजिंग में अपने ब्लशेस भी लॉन्च करे हैं, इसी में उन्होंने हाइलाइटर भी लॉन्च करे हैं और इसी तरह की पैकेजिंग में उन्होंने कॉम्पैक्ट भी लॉन्च करे हैं. अब मैंने हाइलाइटर के लिए ये बात नहीं बोली क्योंकि हाइलाइटर आपने एक बार लगा दिया, बार बार रीअप्लाई नहीं करते थ्रू आउट द डे. और पाउडर हाइलाइटर्स जनरली आपके टिक जाते हैं 7-8 घंटे तक आराम से, ठीक है. दूसरा उनका ब्लश जो है वो एक मैट ब्लश है, उसमें भी मुझे रीएप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. कॉम्पैक्ट पाउडर्स आपका एक तरह से टचअप का काम करते हैं और इन्होंने जो ये पाउडर बनाया है ये इतना शानदार है. आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड दिस हैज बीन समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर माय अंडर आई एरिया एंड इट डजंट लुक ड्राइंग थ्रू आउट द डे. It doesn't crease. It has a really good lasting power and it looks so soft. The pigmentation, the formula of this powder is just absolutely phenomenal. But I don't like the fact that it doesn't come with an applicator, a very small sponge applicator. It does come with a mirror, which is of great quality. The packaging is so sleek, and I know that a lot of people will say, "आपको sleek packaging भी चाहिए और आपको applicator भी चाहिए." I get that, guys, but it's K Beauty, and they can definitely do this. मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि अगर इसमें एप्लीकेटर जुड़ जाएगा तो मतलब सोने पे सुहागा, चेरी ऑन टॉप वाला हिसाब हो जाएगा. एंड व्हेन आई रिव्यू दिस प्रोडक्ट, अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर मैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर पे एक छोटा सा पतला एप्लीकेटर रखूंगी तो क्या फिट आ जाएगा. तो मैंने कहा वो तो डिपेंड करता है कि साइज क्या है. लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड एंड अब्यूज्ड एंड हाउ. दिस इज द वेट एंड वाइल्ड blush and I think it's in the shade Mellow Wine. I can't see the shade name now, but this is what it looks like now because of the packaging. It broke in the transit. I love the color of this blush, matte blush. It stays for about 5 to 6 hours and it looks so beautiful on my skin. If you are my skin tone, this is the color that you will enjoy as your nude makeup blush. I have another eyeshadow palette from Wet n Wild, which is a Rose in the Air, and that is also going to break very soon. So you can see I have almost broken 4 products from Wet n Wild, which is why I don't like the fact that they never work on their packaging. They have been increasing the price of their products, but they are not working on the packaging. If they do, I think their products will be way more long lasting. They are in terms of as a formula, but as a product I just cannot rely on them because I can't travel with them, and then what's the point. We have a palette here. This was something that I used in one of my sponsored videos as well, but here I am going to criticize products that I've used in my sponsored video. This is the one. It's from LA Girl and it's their glam palette. I think it comes in 2 or 3 shades, like versions. This is their 2 blushes, bronzer and highlighter version in the shade Glam, and it comes with 2 blushes. I like this one more. If I have to use this one, I always mix the light blush with the darker one and then I get my perfect shade. Otherwise I don't like to use it as its own. Then I also like to use their bronzer. The highlighter in here is great when I have really oily skin, but if I have dry skin I avoid to use this, then it can look dry. But this is not the reason why I am featuring this palette in my video. This is the reason, okay. It broke because of my mistake, and that is not the reason why it is here. It is here because of the size of the mirror. Now you'll say, Archana, you can never stop complaining, huh? You always say that,
Okay, it doesn't have a mirror. It has a small mirror. What's the problem with you? The problem here is that if it would have been an eyeshadow palette, the size of the mirror would have been fine. But this is a face palette, and if I'm applying my blush and I have really chubby cheeks, I can never see my whole face in this mirror and actually place my blush correctly. And in order to see whether it is synchronizing with the rest of my makeup or not, I need that, right? So the size of the mirror here is not incorporating with the face palette. If it would have been an eyeshadow palette, perfectly fine. But here I have to apply two blushes, a contour and a highlighter, and I don't think it's apt for that. Maybe for highlighter it is, but for blush and contour, no, it is not. So which is why I think they can increase the size of the mirror in this palette, and it is for about 1100 or 1000 rupees as far as I remember. It was around that only. I'll place the price somewhere here on screen. So this is the reason why I think this particular packaging is impractical. Okay, next one is one of my favorite highlighters that I have also featured in my underrated products, and this one is from LA Colors, and it's the strobing illuminating powder. It's in gold halo. Yes, gold halo, and it was around for 600 or 700 rupees as far as I remember. It was for 650 rupees. This is the shade of the highlighter. It is one of my favorites. It looks blinding on the skin, and if you want a very strong, like, blinding highlighter, this is the highlighter that you should go for. But the problem with this highlighter is that when you open it up, here is the highlighter, and if you want to see the mirror, you'll have to flip this like this and then apply your highlighter. And if you need more product, then you'll again do this. It has more action than any Avenger has ever done. I'm kidding. Okay, it's obviously it's an exaggerated sentence. Let me just show you the right way of making a packaging like this. Here is the sugar powder. Now if I have to see the mirror, it's right on the top of the product. I'll take my applicator, which is here. Now I don't have to take my applicator again and again. I just take my applicator once, right? So we don't have to take it again and again. We dip our product again and again and then see mirror. So in this case, this is practical. Next one is this Revlon Colorstay eyeshadow palette. Now I really like it because it's travel friendly, but the way they have designed each pan here is not practical. Okay, it's so difficult as a user. It's not user friendly at all. You have to take your brush. Let me just show you. For example, if you're taking a transition shade, when you do this, the other shade, can you see the other shade? This is what happens. I was just targeting the transition shade, and this one also started falling. Just half centimeter of size enlargement would make this even more better, because currently it is travel friendly but not user friendly. I absolutely love this gold shade, this burgundy shade, also the transition shade. I don't like this, the lightest shade in here. Maybe for lighter skin tones it will work. The pigmentation and overall how the palette works is fine, but I don't like the size of this palette, how they have designed each pan. No. Another eyeshadow palette is from Revolution Pro, and this is what it looks like. I know half of you guys are like, but you said this is one of your favorite palettes. ये कहाँ से आ गया इसमें? ये पैलेट ऑलमोस्ट 1350 रुपए का है, और इसमें कोई भी शीशा नहीं दिया है, और इसकी पैकेजिंग देखिए. एक सेकंड रुकिए. आई नो रेवोल्यूशन प्रो मेकअप रेवोल्यूशन का ही एक हाई एंड वर्जन है, जिसे लैक्मे एब्सोल्यूट वाली जो लाइन है उनकी, वो थोड़ी महंगी रखते हैं. जब आपने महंगा रखा ही है तो थोड़ा सा मतलब आप इसको प्रैक्टिकल बना सकते हो. पहले तो आप इसका जो कैप है, ये जो आपने बनाया है लिड एरिया, वो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया है. दूसरी चीज, 1350 के पैलेट में आपको एक शीशा तो देना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे कलर्स आपने दिए हैं. उन कलर्स को जब मैं यूज करूंगी तो मुझे दिखना भी तो चाहिए कि कैसा लग रहा है. मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का अच्छा खासा कलेक्शन है, और उसमें से मैंने एक वीडियो भी बनाई है कौन से ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं बेस्ट है, कौन से एवरेज है, और कौन से ऐसे हैं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी पिगमेंटेशन में पैचीनेस, इस तरह की कुछ ना कुछ दिक्कत है उस पैलेट में. अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये मेरा एक पसंदीदा पैलेट है रेवोल्यूशन प्रो से, लेकिन इन्होंने शीशा नहीं दिया है,
पैकेजिंग काफी फ्लिम्जी है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी शिकायत रहती है, विच इज वाई आई थिंक इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट एट ऑल। नेक्स्ट जो दिखाने वाली हूँ ना, मतलब दिस वोंट बी अ सरप्राइज, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी गेस्ड इट। Oh my god. This is from Rene Cosmetics and I love their highlighter. If you know, their stick highlighter is one of my favorites. But this lipstick, every single time, I always have to use the best trick to just close it so that it won't open. But the cap of this is not as अप टू द मार्क एज आई वांटेड टू बी। फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद है, इतना स्मूथ क्रीमी बटरी सॉफ्ट फॉर्मूला है। अगर आप स्क्रब करेंगे उसके बाद लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। 1.5-2 घंटे चल जाएगा। जितना ऑयली आप खाना खाओगे उतनी जल्दी ये फेड हो जाएगा और ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, तो ये आराम से ट्रांसफर करेगा। इसके कलर्स का कलेक्शन अच्छा है, तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको बहुत सारी लिपस्टिक इकट्ठा करना नहीं पसंद, तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे एक ही लिपस्टिक में 5 आ गई तो मुझे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। बट एक भी लिपस्टिक इसमें अब ऐसी नहीं बची जो थोड़ी बहुत टूटी ना हो, थोड़ी बहुत। ओके, हर लिपस्टिक स्टेन हो जाती है बहुत खतरनाक तरीके से मेरे हाथों पर, और हर लिपस्टिक इन 5 शेड्स में से हल्की थोड़ी बहुत टूटी ही है मुझसे। और ऐसा नहीं है कि मेरे बटर फिंगर्स हैं और ऐसा कुछ, मैं इसको बहुत अलग से संभाल के, मतलब इसको मैंने एक अलग से, जैसे बोलते हैं ना सिंहासन देना, वैसा वाला काम है। इसको अलग से जगह दे रखी है अपने मेकअप कलेक्शन में। फिर भी भाई इसका ढक्कन जो है कैसे ना कैसे खुल ही जाता है, और ये इतना इम्प्रैक्टिकल है। आप इसके साथ ट्रैवल कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी जो कैप है वो खुल ही जाती है। आपके पूरे बैग के अंदर स्टेन्स आ जाएंगे। एंड मैं आपसे बात करते करते इसके साथ खेल भी रही हूँ, तो ये उस चीज के लिए ठीक है। आप थोड़ा बहुत, जो लोग कह रहे हैं कि इसमें एक 90s वाइब है, ग्रेट, लेकिन जितनी इसमें अच्छी 90s वाइब है उतना ही इम्प्रैक्टिकल ये है। इसकी कैप को बंद करने के लिए ही पहले तो आपको एक एंगल ढूंढना पड़ेगा परफेक्ट। हमेशा आपके हाथ स्टेन हो जाएंगे और लिपस्टिक ब्रेक होगी ही होगी, नो मैटर हाउ रिस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड यू आर, डजंट मैटर, टूटेगी ही टूटेगी। तो ये वो प्रोडक्ट्स थे गाइज इन माय कलेक्शन दैट आई फील आर प्रैक्टिकल। मुझे ऐसा लगता है ये उतने यूजर फ्रेंडली नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, या कंपनी ने उन्हें डिजाइन करते समय बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं लगाया अपना। तो ये मेरा ओपिनियन है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू ऑल्सो हैव सम प्रोडक्ट्स दैट यू डोंट लाइक इन योर मेकअप कलेक्शन, और you feel that, I just feel that if this product had this particular feature, it would have been perfect. Let me know in the comment section below and I'll see you guys very, very soon. Bye.